Hello, dear students. Today we will discuss worksheet number 68. How do organisms reproduce? Reproduction in human being. In human being during adolescence, many morphological and physiological changes occur in the body of both male and female. The body of male and female develops secondary sexual character, which are brought about by hormones secreted by endocrine gland. As the rate of general body growth begins to slow down, reproductive tissues begin to mature. This period during adolescence is called puberty. The male and female gametes production begins in respectively reproductive organs, testes and ovary. During puberty, during reproductive age of male, which lasts his lifetime, sperms or male gametes are produced. However, in females, the onset of menstrual cycle or menarche signals production of female gametes ova. Production of ova stops in female when she reaches the age of 45 to 50 years. At this stage, the menstrual cycle stops and is referred to as menopause. अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ portions which produce the germ cells and other portion that deliver the germ cells to the site of fertilization. The formation of germ cells or sperm takes place in the testes. These are located outside the abdominal cavity in scrotum because sperm formation require a lower temperature than the नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. यानी टेस्टिस बाहर रहती हैं क्योंकि उनको कम टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी से फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. The role of testes is to secrete a hormone called testosterone. In addition to regulating the formation of sperm, testosterone brings about changes in appearance seen in boys at this time of puberty. यानी यौवन अवस्था में बॉयज में जो चेंज होता है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है. यानी कि दाढ़ी मुँह झुकाना, आवाज़ भारी हो जाना, मसल्स डेवलप हो जाना. The sperm formed are delivered through the vas deferens, which unites with the tube coming from the urinary bladder. The urethra thus forms a common passage for both the sperms and urine along the path of the vas deferens glands, like the prostate and the seminal vesicle, add their secretions to show that the sperms are now in a fluid, which makes their transport easier, and this fluid also provides nutrition. The sperms are tiny bodies that consist of mainly genetic material and a long tail that helps them to move towards the female germ cell यानी कि ओवा. अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं. द फीमेल जर्म सेल और एग्स आर मेड इन द ओवरीज. यानी ओवरी का मेन फंक्शन यही है. Ovaries are also responsible for the production of some hormones like estrogen and progesterone. When a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. On reaching puberty, some of these starts maturing. One egg is produced every month by one of the ovaries. The egg is carried from the ovary to the womb through a thin oviduct or fallopian tube. The two oviducts unite into a elastic bag like structure known as uterus. The uterus open into the vagina through the cervix. The sperm enter through the vaginal passage and travel upward and reach the oviduct where they may encounter the egg. The fertilized eggs or zygote gets implanted in the lining of the uterus and starts dividing. The mother's body is designed to undertake the development of the child as the uterus prepares itself. The lining of the uterus thickens and is richly supplied with the blood to nourish the growing embryo. The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of placenta. A disc which is embedded in the uterine wall. It contains villi on the embryo side of the tissue. On the mother side,
are blood spaces surrounding the villi, providing a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo. And the waste substances generated by developing embryo is removed by transferring them into the modern blood through the placenta. अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. राइट द फंक्शन परफॉर्म बाय टेस्टिस, वास डिफरेंस, ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस एंड प्लेसेंटा. तो टेस्टिस का जो फंक्शन है वो हम देख लेते हैं. यह द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, यहाँ से आप कर सकते हैं टेस्टिस, ये लिख सकते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस. ठीक है. और द रोल ऑफ टेस्टिस, यहाँ से फिर दूसरी लाइन लिखनी है आपको. द रोल ऑफ टेस्टिस टू सीक्रेट ए हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. बस यहाँ तक आप लिख लें. और अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर इसका वास डिफरेंस का देख लेते हैं फंक्शन. तो वास डिफरेंस में क्या है, यहाँ से करेंगे आप इसको. द स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस विच, यहाँ से यहाँ तक कर ले इसको पूरा, which unites with the tube coming from the urinary bladder. तो इसको आप कर लें यहाँ तक. अब इसका दूसरा पार्ट है ओवरी. ओवरी का क्या फंक्शन है, तो ओवरी का फंक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं आराम से. द फीमेल यहाँ से पूरा इतना कर दें. द फीमेल जर्म सेल और एग्स आर मेड इन द ओवरीज. ओवरीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ठीक है, इसका पार्ट ये हो गया. अब आप देखते हैं ओविडक्ट. ओविडक्ट का फंक्शन आप देख लेते हैं. द एग इज कैरीड, यहाँ से ये पूरा कर लेंगे. द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वर्म थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब्स. तो ये इसका फंक्शन हो गया. अब है यूट्रस और प्लेसेंटा का, तो इसको हम देख लेते हैं. यह है यूट्रस का क्या फंक्शन. द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट, ये पूरा लिख रहे हैं. द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट गेट इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड स्टार्ट डिवाइडिंग. ठीक है. और the mother's body is designed to undertake the development of the child, hence the uterus prepares itself. Placenta function. The embryo gets, यहाँ से लिख लिया आप. The embryo get nutrition from the mother's blood, ये पूरा लिख लिया यहाँ से. With the help of placenta disc which is embedded, यहाँ तक लिख लिया. Which is embedded in the uterine wall, it contains villi on the embryo side of the tissue. Placenta होगा. अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. Why are testes located outside the abdominal cavity? टेस्ट यहाँ से आप करेंगे इसको. These are located outside the abdominal cavity in scrotum because sperm formation regulate a lower temperature than the normal body temperature. यानी बॉडी टेम्परेचर इसको कम चाहिए होता है टेम्परेचर, इसलिए ये आउटसाइड बॉडी के होते हैं. What changes are observed in the uterus subsequent to implantation of young embryo? The mother body is designed to undertake the development of the child, hence the uterus prepares itself. The lining of the uterus thickens and is richly supplied with the blood to nourish the growing embryo. The embryo gets nutrition from the mother's body with the help of placenta. यहाँ तक लिख दीजिए आप growing embryo. 4 है, name the part in the female reproductive system where fertilization takes place. तो oviduct और fallopian tube.